don't know what happened in the second. I'll have to question this. हेलो एंड वेलकम माय वंडरफुल पैनलिस्ट गेम थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया आज लो स्कोरिंग देखने को मिला थोड़ी सी फाइट देखने को मिली बीच में तो उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आ गया वरना दिस काइंड ऑफ स्कोर्स वी डोंट एंजॉय इन आईपीएल राइट बीच में लगा दिल्ली शायद नहीं जीत पाएगी पर फिर लोअर ऑर्डर ने आके बचा लिया उनको लेकिन हम सबसे पहले केकेआर की बात शुरू करेंगे केकेआर की बैटिंग थी आज सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं बिकॉज दे आर ऑल ओवर द प्लेस डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग येट सो लेट्स स्टार्ट विथ यू जॉयदा ओपनिंग पेयर बार बार चेंज होता है ऑफकोर्स एरन फिंच आज वापस आए थे तो उनको ओपनिंग में ही भेजते वो लेकिन उनके साथ वंस देन दे डिसाइडेड टू सेंड वेंकटेश और फिर आज क्लिक नहीं हो पाए your views It's obviously a team that's really struggling, lost, has no idea what the game plan is, trying everything out of the hat. कुछ ना कुछ चले. अच्छा वेंकटेश 6 महीने पहले अच्छा खेला तो उसको ट्राई करते हैं. Sam Billings looked to be the chosen one. Now he's out of the team. Pat Cummins आने का पहले Pat Cummins is coming. Pat Cummins is coming. वो तो बिप पहन के बैठे हुए हैं. Now Aaron Finch जो 8 या 9 टीम के लिए खेले हुए हैं. Now he's the chosen one. So complete disarray. I have been part of teams when we haven't done well, but at least the thinking was right. It's your main players who couldn't perform for you. So we failed with Gale, with Ponting, with Shoaib Akhtar, we failed. It's okay. If they can't do it, who can? But, complete disarray. This can happen because KKR hasn't played well for a while. I know they reached the final out of the blue last year, but that was also against the run of play. Yeah. It didn't see they won 5-6 games on the trot, which doesn't happen every year. But if you see in the after 2014, that batch that has gone, they have not consistently played well. They've just made it in 2018, they made it to number 4, lost to Hyderabad, Khatam. Even when they've made it, they've just made it to the number 4. Lamini. Thanks. So, what I was saying, even when they've made it, they've just about made it. They're not a force to reckon with. That's the reason for that in very short is that their main players now, Finch has played 8 or 9 franchises. Venkatesh Iyer, second season. Nitish Rana, hot and cold. Shreyash Iyer, one good player there. Again, so if you see the top 6 or 7, who are the people you really back? Who are the people you really have faith in? Back in the day, Robin Uthappa, people, Manish Pandey, at the peak of their careers, 500, 600 runs. Where are those people? And I say this with utmost respect. When you sit and do a team in the auction, all the good teams that have a good team now, you look at the teams that are doing well, Gujarat, Lucknow, you look at the guys who are batting up there. How many international players are batting up there? Aaron Finch is the only one international player. Otherwise, Shreyash Iyer in and out. Out of the top 7, we don't have one international player who is a regular in his team. Neither is Sam Billings, nobody. True. But whereas if you see others, KL Rahul, who's with him, other teams, Shikhar Dhawan, in a white ball players. So a lot of the guys who are, I feel you have to have your international players, whether it's Indian or international, but they should be playing international cricket. Those are the guys. And then Nitish Rana will chip in, Rahul Tripathi will chip in. But those are the guys who will have to do it for you. Right. So once again, we saw that the whole pressure literally came on to Shreyas Iyer now. And despite that pressure, and when others are not performing, he still manages to do well. Batting se bhi click हुए, captaincy, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें अब. But Veda, what are your views on his batting today? See, I mean, he's trying to do whatever he can best individually, but if he doesn't have support from the other end, Exactly. Alone you can't do anything. There will be days probably where you can single-handedly win games. That also will be like eventually, if you've scored 100 being a top order bat, or if you're Whether you're back. whether like if it is lower down, like how we saw Tiwari or Rashid Khan who comes in, last like 10 balls, 30 runs. That is how you were going to win games. But with just 40 runs up front, and Nitish Rana kind of contributed. But if you look at it, he's just been alone who's been doing on the days he scores. Even on the day he scored a 80, there was a big blunder with the batting lineup. What happened after that? So they're not quite consistent with the batting order.
Plus, at the same time, I quite don't understand why they're not they just dropped Pat Cummins. Understandably, he went for runs, but he did win you game. Once you Yeah. have match winners, you need to give them games and you need to back them. And talking about regular international, Pat Cummins is a regular international. You need to have him in the squad. The kind of Exactly. experience he gets, he's a leader, leading Australia in the Test squad. Those kind of skill sets will come into play at some point. You True. can't just let go of someone, and especially someone who's an all rounder. I think KKR is mixing up a lot. Yeah. I Three guess they versions were. plays three versions for Australia. Yeah. KKR was probably just confused. He's won them a match also previously, but I guess in the last few matches he leaked a lot of runs, and they just decided to drop him. He will Complete come. panic. Complete panic happens when you lose a Definitely. couple of games. Complete Yeah. panic. You're trying out everybody. True. Everybody's giving you advice. Suddenly, the people from the outside the team are giving you advice. You're picking anybody. You've lost the plot. True. True. No, True. he True. might have gone for runs, but you need to understand that the games he's gone for runs. Uh, it's fine. He will come back and give you those games where he's going to. Not to forget, he's bowling the difficult overs, so you will True. eventually go for runs. But the days you bowl well, you will be winning games. Like in the death when he doesn't go for runs, if he's saving about 10-15 runs for this team, if they're bowling first or things like that, those kind of things matter. That's when you need those kind of match winners. And I feel, I mean, amongst the players who are there, Pat Cummins definitely is a match winner for me. And KKR needs to find I a way agree. to back him, because if they're backing Russell so much, Russell is Hmm. not someone who would perform every game. Yeah. So I think they Aaron should. Finch. Aaron Yeah, Finch doesn't perform every game, but he gets games. So why not yeah, Pat Cummins? yeah. You need to have like similar criteria if you're going to choose players, because the kind of innings he played, it was, I think, better than what Russell did. Like Russell got a 30 ball 70, but Cummins came and scored some 15 balls 50, which was Yeah. from a much difficult position. So those kind of players are indeed special, and you need to look about how you can utilize them more. True. I agree. And with the players that they decide to go with, they keep shuffling them. Again, we saw Sunil Narayan. Last time opening spot mein bheja, is bar middle order mein bheja. So KKR just continues doing these experiments. Rima, what should they do going ahead? They should stick to a particular order and the set of players, right? देखिए पहले तो जैसे जयदीप और वेदा ने बोला, बैक योर प्लेयर्स, बैक योर मैच विनर्स। True. उमरान मलिक पहले 3 मैचेस चाहे 1-2 विकेट लेते थे, लेकिन 40 रन्स, 4 ओवर्स 40 रन्स, 45 Yes. रन्स, लेकिन उसके बाद भी बैक किया। पैट कमिंस ने आपको मैच जिताया था, वो एक उनके पास ऑप्शंस थे। प्लस वेंकटेश अय्यर को आपने कहाँ यूज करना है? ओपनिंग में बैक करना चाहते हो, फिनिशर में बैक करना चाहते हो, मिडिल ऑर्डर में करना कहाँ चाहते हो? सो जब आप इतने ज्यादा माइंड गेम्स खेलोगे ना, तो प्लेयर एज अ प्लेयर मैं बताऊँ ना, मेरे माइंड में डाउट आ जाएगा, यार मुझे कल ओपनिंग करनी है, मुझे मिडिल ऑर्डर खेलना है, मैं फिनिशर हूँ, मैं हूँ क्या? क्योंकि बिल्कुल। सबका रोल डिफरेंट है। एज एन ओपनर नया बॉल फेस करना है, स्विंग फेस करना है, बाउंस फेस करना है। एज अ फिनिशर कम बॉलों पे ज्यादा रन बनाने हैं, एट द सेम टाइम विकेट नहीं देनी। सो आप अपने ही प्लेयर्स के माइंड से खेलें। ये गेम है, इसके सामने ओपोनेंट के माइंड से खेलना। इतने सारे अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फेल होना आपका बनता है। और जिस तरीके से अगर आप इनका कॉम्बिनेशन भी देखेंगे, सो अपने ही प्लेयर पे फेथ नहीं आ पा रहा। श्रेयस अय्यर ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, क्योंकि और कोई चल नहीं रहा। सो ये काम चलाओ बैटिंग चल रहा है। सो यहाँ पे सफर कर रही हैं जो टॉप टीम्स है ना, वो सफर कर रही हैं। आप शॉर्ट ऑफ प्लेयर सोच लो, अपने रिसोर्सेज को ठीक से ना यूज करना सोच लो। नीतीश राणा देखिए, नंबर 3 से शुरू हुए थे, नंबर 5 6 पे पहुंच चुके हैं। रन्स कर लिए, गुड, अच्छा। अबे अगले मैच में नंबर 3 पे आ जाएंगे। रन बना तो अगले मैच 3 पे। एब्सोल्युटली। डेथ ओवर्स में आपके पास रसल डेथ ओवर के बॉलर कभी थे ही नहीं। वेंकटेश अय्यर डेथ ओवर में बॉल डाल रहे हैं। रसल ने कभी 4 बॉलर लेके कैसे? बिल्कुल। सो क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉन्फिडेंस है? आपके मन में सेल्फ डाउट आ चुका है। अब इसका द फिफ्थ बॉलर इज वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और एंड्रे रसल। सब 10-10 करके देते ओवर में। मुझे पता है 4 विकेट लिया है। सैयद ने भी डाला आज जी। हां, 9.14 is the economy of Andre Russell. So he's a batsman who can bowl. He's not an all-rounder. He might have got 4 wickets. He can get 6 wickets in one over. मैच में 4 विकेट्स लिए तो बट कंसिस्टेंसी नहीं है ना, एक आधा मैच ही ना लेंगे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
अच्छी टीम है, Panic. बेटर कर सकती थी, लेकिन शॉर्ट ऑफ प्लान्स नजर आ रही है। पैनिक ड्रेसिंग रूम में हो चुका है। जब Sure. डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होती ना, इसका मतलब पैनिक बटन डेफिनेटली ऑन। बिल्कुल Sure. बिल्कुल। हम नितिश राणा की बात कर रहे थे, एक प्लेयर जो अब तक नहीं क्लिक कर पाए थे, लेकिन आज उन्होंने कर लिया, क्रूशियल रन स्कोर किए 57 of 34 व्हेन द टीम नीडेड हिम। दामिनी, योर व्यूज ऑन हिज इनिंग्स? Uh, See, until it was only Shreyas Iyer who was batting. All Aaron Finch didn't click, Venkatesh Iyer, Indrajit, Narayan, nobody was clicking. It was only Shreyas Iyer who was trying his level best to pull the KKR innings. And once he got dismissed, the team score was 83. It was almost seeming to be done and dusted for KKR. So I can just say as a fan, we are grateful that Nitish Rana played that responsible innings with Rinku Singh, of course. Their partnership of 62 runs of 36 deliveries ensured that KKR at least managed to reach a 46, some score that they might say is quite, at least it is something that will help them to fight against the opposition. True. Otherwise, and at this point of time, I have to say it is not just one department for KKR that is going wrong. When you lose 5 consecutive matches, that is, it is not that it's only your bowling that is wrong or your batting that is wrong. Entire management, everything has to change. You have to think, you have to deeply scrutinize. Too much of chopping, too much of changes in the team, it is not happening. Somewhere things are going massively wrong for KKR. At this point of time, I don't know what KKR's chances are in in the remainder of the IPL, because if you can't defend 147, the previous match only Rajasthan scored 144 and they still managed to win convincingly. So your bowling is also not good. It's not just your batting. You Right. can't even defend a 147. That only shows that it's not only your batting, it's your bowling also that's very bad. So you have to change your mindset. You have to bring in that thing in you that I have to win from any situation, no matter how hard it is. Right. For sure, they will go and make more changes for their next match. Do probably shuffle the order, bring in God knows what. But in अब वो that case, चेंजेस किए ना तो पूरा स्क्वाड खेल जाएगा। पूरा स्क्वाड आई थिंक अब तक खेल चुका है। पूरा पहली स्क्वाड टीम मुझे ऐसी लगता है होगी, खेल चुका अभी है, अभी बचे हैं, अभी दामिनी अभी क्योंकि कुछ प्लेयर्स बचे हैं। एक ऐसा मैच नहीं गया है जहां पे कंफर्म्ड हम कह सकते हैं कि ये केकेआर की कंफर्म्ड प्लेइंग 11 है। प्लेइंग 11 में भी कोई कितना चेंज इतना कैसे कर सकता है? एक मैच हम नहीं कह सकते जहां पे कंफर्म्ड प्लेइंग ओपनिंग पेयर सेम रही है या नंबर 3 सेम रहा है। हर मैच में इतने चॉप्स, इतने चेंजेस आज तक, एटलीस्ट ये कमिंग पहले जो 3 मैचेस थे, हाँ अच्छी तरह से केकेआर ने जीते। उसके बाद के 5 मैचेस में एटलीस्ट मैं तो कंफर्म नहीं बता सकती कि केकेआर की प्लेइंग 11 कंफर्म्ड क्या थी, अगर थी तो उसमें कौन सा प्लेयर किस नंबर पे आएगा, किस नंबर पे नहीं आएगा। और अगर ऐसे चेंजेस होने ही वाले हैं, डेविड हसी और ब्रेंडन मकलम का भी बारी आ जाएगा लग रहा है। मैं यही बोल रही थी, अभी मैकलन आ जाएगा, अभिषेक नायर भी आ जाएंगे, भारत अरुण भी थोड़ा नेट में डाल लेंगे। तो जोयदा अगर वैसे चेंजेस होने वाले हैं तो हाँ जी रीमा, आप क्या कह रहे थे? नहीं बोलो। नहीं, आई वाज जस्ट कमिंग टू जोयदा कि रिंकू सिंह जो आज भी खेले, नीचे आए थे, पिछले मैच में भी थोड़े बहुत रन्स किए थे, बट ही हैड ओनली सो मच टाइम, फिर भी उन्होंने 23 रन्स मारे हैं। तो मे बी अगली बार अगर वैसे चेंजेस करना है तो उनको थोड़ा ऊपर भेजा जाए या ओपनिंग पे भेजा जाए। See, I don't think so, because he's always batted 5-6 for UP. He doesn't bat at the top. We just can't move people up and down just because they've scored runs. Nitish Rana, okay, you got 50, number 3. Next match, 6, number 9. ऐसा तो नहीं होता है ना. Everybody's got a place and a plan in place. But for me, this was overall quite a poor game of cricket, because two teams struggling. If this was any other team in the top 4, they would have creamed KKR. 148, they would have won. See, that's what I was saying. When David Warner got out, मुझे पता चला कि panic आने वाला है. Because till he was there, everything was on song. And sometimes I wonder, if I am Prithvi Shaw, if I am Mitchell Marsh, why don't I watch David Warner and see 145 chase करने के लिए? He was quietly batting 22 balls with 37. पता भी नहीं चल रहा था. Yeah, he got a really good bouncer. वो आ गया जल्दी, control नहीं कर पाया. वो तो हो सकता है, skill का game है. But I'm just saying, till he got out, he looked in control. Because he was chasing 140, not chasing 202 or 180. उनका गेम से पता चल रहा था. तो मार्श आया, मारा, टॉपल करके गिरा, मारा चौका, मारा आउट. अरे ये लग रहा था 19 तो वो चल रहा है.
So just overall a very poor game. And if Delhi has to buck up also, because Delhi is actually on paper potentially a better team than KKR. They need to buck up. They need to play better cricket. And one person I know you. Yeah. Yes, Yeah, I would like to continue with what Joydeep sir said, that even chasing 147, it was not a very easy cakewalk for DC. In their journey they literally lost 6 wickets. It literally, the match went on till the last over. So this only shows that even DC hasn't played very well, and right from ball one it was KKR who was attacking them. That unbelievable dismissal of Prithvi Shaw. So it wasn't a very easy chase for DC as well. Yes. Love the wry smile on Veda's face, just because she's won the battle today. There's this glee on her face. Both these ladies. Yesterday also, I only won. Just saying. Both these ladies at the bottom, really glee on their face. Glee. Tisha needs to take out the thing and see who's won the prediction so far. Actually, ये होना चाहिए. It's either you or me. I think that they have to do a little bit of background work. I think right now you're on my team now. Lead कर रही हूँ वेदा. You did more shows than me. I think it's 14-2 in my favor, but today is your day, so today is your evening. 14-2. 14-2, Veda. Veda. I'm not even done with any shows. Just saying. Let's talk about Kuldeep. I'm dying to talk about Kuldeep. Talk about Kuldeep, please. Go ahead, Joyda. Because he, in 2018, got a raw deal. Seriously speaking, he was an India bowler in 3 versions. Suddenly, when chosen one comes, no problem with the chosen one coming, but you should not make your own person feel step-brotherly. No problem with, new players come. Venkatesh is calm. Varun is calm. Varun is not even in the dugout now. He's in the balcony. And this can happen. In sport, we've played, up and down happens. It's how you treat your players. It's how you treat them. Didn't get a game. And you could make out under the pump. And I have spent some time with him. We are at the back of the bus together. I could see him insecure. And that's the last thing you want as a player, especially in this version where you're meant to get carded. You will have. But there is a God above, and against the team that didn't play him, didn't retain him, didn't buy him. I'm not saying because he got the 4 wickets, but look at it. I want everybody to do well. There's enough space for everybody in this world. You cannot treat anybody shabbily, and he was treated shabbily. I can say this because I was part of the team. But today, very well done. 3 overs में 14 run और 4 wickets. I can say backbone of Delhi from the bowling side, right, Rima? Absolutely. देखिए लगातार उनका 4th ही मैन ऑफ द मैच है. बीच में एक साथ गैप था. इसको कहते हैं कमबैक. और ये सिर्फ कुलदीप से नहीं, जो कुलचा है ना हमारी जोड़ी, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे. वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए. कुलदीप तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे थे आईपीएल में. उसके बाद जो कमबैक किया है, गलती केकेआर ने भी की है. केकेआर आदमी को ओवर अटैक कर रहा था. ठीक है, आपके लिए उन्होंने अच्छा नहीं किया, ले आपने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन अभी वो रिदम में है, वो टच में है. जिस तरह आप बैटर से पंगे लेते ना, उसी तरह आप बॉलर से पंगे मत लीजिए. और यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया वो क्लास बॉलर है. अभी तो एक गलती की है. पंत की भी कैप्टनसी आज डाउटफुल थी और श्रेयस की भी थी. जिस तरह से उन्होंने इतनी ज्यादा एरर किए हैं. 4 ओवर नहीं डाले. आपका बेस्ट बॉलर ने 4 ओवर नहीं डाले. इट शोज कि पंत भी कहीं ना कहीं जो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो कैप्टनसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है. सिमिलरली श्रेयस अय्यर ने भी वो मिस्टेक किया जो बॉलिंग चेंजेस में हुआ. लेकिन कुलदीप ने बता दिया कि जब स्पिनर्स रिदम में होते हैं ना, जब रिलीज उनके हाथ से हो रहा था ना, वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था. जब लेग स्पिनर सामने रिलीज करता है, स्पिनर आ गया, स्पिनर आ गया. Shubhati was facing, then not so good. How you used? No, she used to tell me in the nets. She's like, I'm not going to bowl to you if you hit me. You're supposed to defend. I said, don't bowl at me. No, I want to bowl, but you don't hit. Defend all the balls. देखो, मैं इसको लेग स्पिन डालती थी, ये मेरे को कवर्स के ऊपर से मारती थी. मैंने फास्ट रन डाल के स्काउट ले लिया. बोला तुमको बॉल डालने नहीं आती. अच्छा, ऐसा कौन बोलता है? We used to like, there was a period where I was working in Delhi and we used to go for practice together, and she's like, I will bowl at you, but you can't hit me. You're supposed to defend. Even she'll bowl full toss on my face also, and she wants me to defend. Yeah, that's what friendship is all about. Confidence ना, confidence में नेट्स पे तो लेके जाऊंगी ना मैच में. पर इधर छाती पे भी नहीं, मुंह पे आता था फुल टॉस. बाकी
बाकी 5 बॉलर डाल रहे हैं, उनको मारो, मुझे क्यों अरे यहाँ मारो? पे तो 9 बॉल हो जाएगा ना, ये कैसी बातें करती तो है? नेक्स्ट में कौन सा 9 बॉल चलता था तुम्हारा? जो भी था, दोस्त है, मारने का नहीं। That ball was dipping and hitting the bail. मैं हिट। Whoa. ये हमेशा Yeah, पोल base and खोलने की down. नहीं रखी है वेदा। मैंने फास्ट ओवर में आउट करा, टेल हिम दिया था मैंने। अच्छा वापस आ जाओ आज की गेम पे वापस आ आज यादव का दिन था, आज उमेश यादव का दिन था, आज कुलदीप यादव का दिन। वैसे प्रिया जी ये गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग था आज के से, ये वाला गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नहीं वो मैं बिलीव कर सकती हूँ। घर का बेटा, घर का बॉय, सुना किसी ने? क्या जी कुलदीप यादव का दिन था, प्रिया जी यादव का हाँ, दिन था, बोले ना उमेश यादव। कुलदीप यादव का दिन था। बाकी बॉलर्स ने भी अच्छा किया, मुस्तफिजुर ने क्या खेला है, चेतन ने पहली बार लेकर आज एक बात मैं कहना चाहती हूँ, दो ऐसी टीम जो अच्छी थी, एक जैसा खेली। मैं थोड़ा चैनल चेंज करता हूँ, खेली न्यूज चैनल, एक मिनट, चैनल चेंज नहीं, न्यूज चैनल में अटक गया, पांचों बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल में अटक गया। सारे पैनल विद 4 women। वेदा कुछ बोल रही है, वेदा प्लीज। नहीं, वो कहते हैं जो उमेश यादव की जो कॉटन बॉल थी, that was really good and I remember you taking such catches. You were a gun fielder. Joyda, I was going to do the तारीफ। जॉयदा सुने, ध्यान दीजिए, वेदा हमने सुना नहीं, वापस बोलना। You were a gun fielder. War. Gun. War. Yeah, she doesn't play anymore. Doesn't matter. Even if Azharuddin is still a gun fielder. Still gun fielder. Yeah, you are okay. Happy. Anyway, आगे बढ़ते। back to the match. Calm down. आज मैच को लेके कोई डिस्कशन होगा ही नहीं, मैच को लेके कोई डिस्कशन होना ही नहीं है आज। उन्होंने किया क्या डिस्कशन के लिए? Actually एक पोल खोल सकती हो रीमा की फील्डिंग के बारे में, but I think I'll keep quiet. Okay, offline discussion. वापस आते हैं रीमा जी। अरे I was comparing your fielding to Umesh Yadav ना, that catch. Superb. Outstanding catch. बिल्कुल वो एनर्जेटिक थे बहुत। आगे बढ़े। हाँ। So yes, दिल्ली की बात करते हैं हम जल्दी से। We have a few more minutes. तो दिल्ली में of course पृथ्वी शॉ वो excellent ball, उमेश यादव कैच हो गया, मिचेल मार्श हमने वैसे उनको horrible ball, excellent catch. हाँ, horrible ball, excellent catch. लेकिन और डेविड वार्नर और ललित यादव ने किया जो वो कर सकते थे, लेकिन ऋषभ पंत वो आज थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव लगे। मतलब इतने विकेट्स डाउन होने के बाद जब आप आ रहे हो तो मे बी आपको थोड़ा कामली सेटल होके स्कोर करना चाहिए, बट डिड यू फील ही वाज मोर अग्रेसिव टुडे, जॉयदा? Yeah, he was. I think that's the way he plays, and he's now stuck between the rock and the hard place because he doesn't have the team that he had last year. He doesn't know what to do. He's playing out of his character. His character is to be aggressive. That's what the Rishabh we know when he plays in the Indian team. Look at the people that play with him. Here, those people are not playing with him. In the Indian team, Virat Kohli bats at the other end, Rohit Sharma bats at the other end, Surya Kumar Yadav. Here, Lalit Yadav is batting at the other end. So, but he doesn't know what to do. And I'm still thinking that he's a little bit confused about how he should play in these conditions. Because he has one way of playing the game. He's still very young. You know, we said Rishabh, but he's been around for what, 3-4 years now. Yeah. It's not that he's a 10-year veteran. So I think he's still trying to find his way of getting, and he'll learn. But today with his dismissal, it could have gone the other way. It could have really gone the other way. Exactly. So coming to that only because after that, we saw the wickets dropping one after another, and then Roman Powell और अक्षर पटेल भी unfortunately out हुए, लेकिन वो crucial 24 runs मार के out हुए। उसके बाद रोमन पावल ने कर दिखाया जो हम शायद उनसे बाकी बहुत सारे मैचेस से उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन आज फाइनली but the whole point is that again that whole pressure came on to the lower order, and अगर वो भी नहीं करते तो शायद ये मैच उनका नहीं होता। रीमा? एब्सोल्युटली, देखिए मेरे को लगता है सिर्फ दो पॉजिटिव है इनके पास आज। एक वार्नर जो अभी भी टच में नजर आ रहे हैं, फिनिशिंग बैटिंग लाइन में जो फिनिश किया, और बॉलिंग में कुलदीप यादव। बाकी टीम स्ट्रगल कर रही है, अच्छा नहीं खेली, क्योंकि एक टीम को मैच जीतना था इसलिए दिल्ली जीता है, और सामने वाली टीम ने फ्लॉस किए इसलिए दिल्ली जीता है। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी टीम ने हेल्प किया है। अच्छा विकेट आप भी नहीं खेले, ऋषभ पंत को हम कितना बोले, आप संभल के खेलिए 3 विकेट। जो टेस्ट मैच में पहले बॉल पर जाकर नेथन लॉयल को टर्निंग ट्रैक में छक्का मार रहा है, उनके आप उम्मीद क्या करेंगे? उनका स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है।
सो अब आपने उनको लाइसेंस दिया है, अब वो लाइसेंस आगे भी देना होगा। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करेंगे, ये उनके खुद के ऊपर है कि वो कैसे अपनी गेम को चलाते हैं। लेकिन अदरवाइज पृथ्वी शॉ का एक बहुत ब्रिलियंट कैच था, वो मैं कहूंगी, क्योंकि वो अच्छे निक में है। डेविड वार्नर अच्छा खेले, पावर ने पिछले मैच में 15 बॉलों पे शायद 33 किए थे, आज 16 बॉल पे 30 कुछ किया है। सो वो अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। ऑलराउंडर खिलाने का उनको एक पर्क्स मिलता है ना, वो कहते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग में भी आपको ऑप्शन देता है, बैटिंग में भी आपको डेप्थ देता है। यहाँ पे दिल्ली को एडवांटेज हुई, क्योंकि समझदार ऑलराउंडर थे। अक्षर पटेल अच्छी फॉर्म में है, पावर की फॉर्म वापस आ चुकी है, पिछले मैच में मैच विनिंग नॉक खेली। सो कहीं ना कहीं यहाँ से आप पॉजिटिव लेके जाएंगे, लेकिन बहुत सारा होमवर्क है इस टीम के लिए करने के लिए। एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी कि कौन जाएगा, कब जाना चाहिए, और कौन अटैक करेगा, कौन किस बॉलर को अटैक करेगा। कुछ डिस्कशन जरूर डिकी पॉन्टिंग के दिमाग में होनी चाहिए कि इस टीम को अगर आगे अच्छी टीम को बीट करना है। राइट। क्या एनी फाइनल थॉट्स वेदा do you have on Delhi going ahead in the tournament? क्योंकि जीत तो उनकी हुई है आज. Well, see, they have the squad. It's just that how they're going to come together and do well. The key batters have to play really well. David Warner has been exceptional for them. With the kind we were talking about, how players get treated in the dressing room and how they come out to be match winners after that. The kind of environment he was in SRH, and then suddenly we saw him go and win man of the tournament in the World Cup, and he's come back and he's continued the form here. So they have been doing well in bits and pieces. The patches have been good. Prithvi Shaw has come good. Kuldeep Yadav has been really well. It is like it's about the middle link for the top order and the lower order. The Rishabh Pant what is there. If he comes good, I think Delhi will look like a different squad altogether. But overall, they've been doing really well. So I can see them winning few more games and put a tough competition. Who was going to qualify for the top? Great. I think we are good to end the discussion of today's match. There's just one more question, which I would like to ask you, Damini, that today, because they brought Chetan Sakaria, and he was quite economical, 17 runs in 3 overs. He also took a wicket, but they replaced Khalil Ahmed, which was not too much of a damage, you think? No, Chetan Sakaria, I don't think it was much of a damage, because Chetan Sakaria was, as you said, was very economical. He picked up that crucial wicket of Aaron Finch, which I think right from the start put on a lot of pressure on Kolkata Knight Riders. So I don't think it was much of a damage. Joyda, I'm coming to you. You're smiling. What do you have to say? Yeah, I think, in any case, this is that state of the tournament where we really need to buck up. Yes. And all the good teams used to play the same team for the first half of the tournament. We did a study and they read a lovely article on this, CSK Mumbai, how they used to play the same team unless there's an injury or there's one Green Top, Turner, whatever, other injury, overseas player injured, so all that. But otherwise, you will never find these teams change. They will start changing halfway through. They'll give a guy 8-9 games, and that hasn't happened. That is a case of panic, and that has to change. If you've got Pat Cummins, one of the biggest names in world cricket, if you've got people like that, you cannot change them overnight. Okay, now Andre Russell fails 2 games. He's thinking, if Pat Cummins can sit out, I can sit out too. So, it creates panic. And then the domestic players feel, oh my God, I'm just playing 1 game. I failed 2. Oh my God, it's my place. Let me go and get a 110 strike rate, 25, so that I play the next game. That's detrimental for the team. Right. But although he can play more, so that amount of cushioning. But in the auction, I don't think KKR was able to do a team, because they've let Rahul Tripathi go. Just couldn't make a team. The ones that are playing in the top 7 will not be part of any good IPL team. And one important point: Owen Morgan wasn't good with the bat last year, but he captained the team well. Because when you've captained World Cup teams, World Cup winning teams, over the years, you can take a lot of pressure. Shreyas Iyer is feeling the heat, no doubt about it, because he's been captain of Delhi for a while, only when Rishabh was injured. Now he wants to be captain. He said, oh my God, it's not as easy as I thought. Morgan, under the pump, could take decisions. So last year, in spite of him not doing well, went to the final. Morgan did nothing, almost playing with 10 people. But he backed the right people, took the right decisions. We're struggling this year. Exactly. That's exactly. And Morgan was not there in the team for his batting skills. It was his captaincy, primarily his captaincy and his fielding skills.
made the difference usually for KKR last season. This time, I would say that it's the players individually who have to now step up for the team. There's no point bringing so many changes in. It's the players who have to bring the change in them. True. We really. Sorry, Veda. I can't hear anybody. Everything was breaking up, so I was wondering if it is my internet or hers. I'm not sure about that. Anyway, so yeah, basically that's what the point she was trying to make is that they need to figure out their right combinations and then stick to it rather than keep doing these trials and experiments and shufflings. So let's see what they do going ahead. Meanwhile, tomorrow's game is Punjab versus Lucknow. Rima, क्या है आपके फेवरेट? What's your pick? देखिए एक बात तो है कि गेम अच्छा होने वाला है अंडर अनलेस पंजाब वही बैंग बैंग वाला ना करे और शिखर धवन अगर रन नहीं ऑल आउट लास्ट हाँ, गेम वो तभी होगा जब जॉयदीप के जो बैंकर है वो रन नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने साथ 2-3 प्लेयर्स को और खिलाते हैं, मिडिल ऑर्डर को खिलाते हैं साथ में। रीमा जी कल इंडिया टीम निकलते तो आप शिखर धवन को रखते? कल वर्ल्ड कप T20 का टीम निकल रहा है कल। जगह मुझे नहीं लगता उनकी बन रही है, मुझे नहीं लगता। शिखर धवन से अच्छा मैं चाहे पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो गए बट मैं ऐसा प्लेयर लेके जाऊंगी जो आपको 5 ओवर 45 रन्स या 60 रन्स, ऐसा प्लेयर जो स्टार्टिंग में इम्पैक्ट कर दे और आपके मिडिल ऑर्डर अपनी गेम खेल सके फिलहाल के लिए। लेकिन अगर किसी और की फॉर्म जाती है तो डेफिनेटली एक बैकअप ओपनर आपके पास शिखर धवन हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है सामने अच्छी टीम है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के पास प्लान ए है, प्लान बी है, डगआउट में भी एक प्लानर बैठा हुआ है तो माइंड गेम्स खेलता है। पंजाब के पास भी ऐसे मेंटोर हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास एक गेम प्लान है, बैंग 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 चला तो ठीक है, नहीं तो घर वापसी 110 पे। how well Lucknow picked the team, that man you're talking about in the auction, how well they picked the team, how sorted they were in the auction. जॉयदीप, आयुष बदौनी जिसको दिल्ली टीम में जगह नहीं मिल रही थी, 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ एक मैच खेलने को मिला, वो भी जबरदस्ती टीम में डाला गया और ऑल ऑफ अ सडन गौतम आते हैं, पिक करते हैं आयुष बदौनी को, 3 मैच वो आपको फिनिश करके जाते हैं, चाहे उन्होंने रन 20 बनाए हों। Rima ji, I'm talking about also the star players. Look how they picked them. Kisko kaha, how well, when you start off an auction, everything panic. But when you see the team, they say, wow, these guys did a good job. When it all pans out. Right. So, Joyda, you're going opposite, obviously. No, Rima, what have you picked? Lucknow or Punjab? I'm going with Lucknow. My GG is there, no? Joyda's chosen Punjab in that case. Veda is with Rima. Veda, Lucknow? If she can hear us. If she's awake, wakey, it's morning. Lucknow. चलो जी, मेरा तो हो गया। Lucknow. अब यार ना अटैक वेदा। इस बार मैं भी लखनऊ के साथ हूँ, जोयदा। दामिनी आप किसके साथ हैं, आप भी बताई दीजिए। लखनऊ। चलो जी, पंजाब को तो हमने यही हरा दिया। कल तो जिता ही देंगे पंजाबी पुत्र, कल आ जाएंगे। कल ऐसे हाई फाइव करते भंगड़ा। पर रीमा आप पंजाबी होके कैसे लखनऊ को चूज कर सकते हो? मैं पंजाबी गौतम गंभीर, बस गौतम गंभीर दिल्ली वाला बैठा है, केएल राहुल वहाँ वेदा का बैठा है, कर्नाटका वाला। लेकिन जयदीप की जो बात बोली जैसे उन्होंने प्लेयर पिक किए हैं, आई मीन उन्होंने ना एक होते हैं सुपरस्टार्स उसमें इतने ज्यादा नहीं है, उसमें सॉलिड प्लेयर्स है। होल्डर सुपरस्टार नहीं है, रवि बिश्नोई सुपरस्टार नहीं है, आयुष बदौनी स्टार नहीं है, सॉलिड ग्रेट नेम। जेसन होल्डर ग्रेट नेम, हैदराबाद खिलाता नहीं था, देखिए क्या कर रहा है वो। बिल्कुल उनको पावर प्ले में डाल रहा है, एंड में डाल रहा है, छक्का मार रहा है, कैचेस लेते हैं, लॉन्ग ऑन में फील्डिंग कर रहा है अंडर प्रेशर। व्हाट अ पिक। बिकॉज उनके पास प्रिया जी, कभी आई नो इट्स लेडीज फर्स्ट, बट कभी मेन फर्स्ट होता है, पिक्स में नहीं होता। तो आपको भी लखनऊ का साथ देना, तो मतलब हम सब एक ही पेज पे। The only time you ask me before the ladies is when KKR is playing. I don't ask you only then. The question never comes to you then. चलिए, पंजाब कल दिखाएंगे अब सबको। कल देखते हैं क्या। पंजाब को हमने यहाँ हरा दिया, वहाँ तो क्या हमारा लखनऊ संभाल देगा। चलिए, चलो कल देखते हैं क्या होता है। Anyway, take care you guys, good night and thank you for being with us.
Thank Good you. night. Good night. Thank you. Bye.